हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पीरा एक्ट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये वीडियो इंतहाई अहम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैप्टर नंबर 10, प्रिवेंटिव मेजर ऑफ द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर चैप्टर 10 द हियरिंग ऑफिसर may proceed under which chapter of the code for requiring security and bonds? Option A, chapter 6, option B, chapter 8, option C, chapter 9 and option D is chapter 11। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, chapter 8। अगला सवाल है, द हियरिंग ऑफिसर may act on his own motion or on receipt of information from option A only the government, option B any source, option D only whistleblower, option D only authority। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, any source। अगला सवाल है, who can require a person to execute a bond under chapter 9? Option A enforcement officer, option B subdivisional enforcement officer, option C hearing officer, option D prosecutor। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी, hearing officer। अगला सवाल है, the preventive measure in chapter 10 primarily relates to option A rewarding officer, option B arrest without warrant, option C execution of security bonds, option D issuance of EPO। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी, एग्जीक्यूशन ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड्स। अगला सवाल है, द बॉन्ड अमाउंट अंडर प्रिवेंटिव मेजर्स इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए स्केड्यूल्ड लॉज, ऑप्शन बी रूल्स ऑफ अथॉरिटी, ऑप्शन सी द कोर्ट और एज प्रिस्क्राइब्ड, ऑप्शन डी प्रोविंशियल ऑर्डर्स। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी, द कोर्ट और एज प्रिस्क्राइब्ड। अगला सवाल है, सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स अंडर चैप्टर 10 आर रिक्वायर्ड फॉर ऑप्शन ए ऑफेंस कन्विक्शन, option B preventing violation, option C police assistance, option D financial penalties। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, preventing violation। अगला सवाल है, who decides the sureties required for a bond? Option A court of session, option B hearing officer, option C enforcement officer and option D commissioner। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, hearing officer। अगला सवाल है, चैप्टर 10 रेफर्स टू द कोड, विच कोड इज बीइंग रेफर्ड टू? ऑप्शन ए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ऑप्शन बी penal code 1860, option C code of criminal procedure 1898, option D evidence act। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी, code of criminal procedure 1898। अगला सवाल है, सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स आर प्रिवेंटिव मेजर्स मेंट टू? ऑप्शन ए पनिश द ऑफेंडर, ऑप्शन बी इंश्योर फ्यूचर कंप्लायंस, ऑप्शन सी कन्फिस्केट प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी अवॉर्ड कंपेंसेशन। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, इंश्योर फेयर फ्यूचर कंप्लायंस। अगला सवाल है, द प्रिवेंटिव मेजर प्रोविजन इज कंटेन्ड इन विच सेक्शन ऑफ द एक्ट? ऑप्शन ए सेक्शन 42, ऑप्शन बी सेक्शन 43, ऑप्शन सी सेक्शन 44 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 41। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, सेक्शन 43। अगला सवाल है, द हियरिंग ऑफिसर्स पावर्स टू रिक्वायर बॉन्ड इज सिमिलर टू पावर इन? ऑप्शन ए सिविल कोर्ट, ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट अंडर द कोर्ट, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड ऑप्शन डी बोर्ड चेयरपर्सन। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, मजिस्ट्रेट अंडर द कोर्ट। अगला सवाल है, द श्योरिटीज इन अ बॉन्ड आर प्रोवाइडेड ऑप्शन ए बाय द ऑफेंडर, ऑप्शन बी बाय द अथॉरिटी, ऑप्शन सी बाय द गवर्नमेंट, ऑप्शन डी बाय द बोर्ड। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए, बाय द ऑफेंडर। अगला सवाल है, विच ऑफिशियल अंडर द एक्ट में इनिशिएट प्रिवेंटिव मेजर्स? ऑप्शन ए हेयरिंग ऑफिसर, ऑप्शन बी enforcement ऑफिसर, ऑप्शन सी डायरेक्टर जनरल, ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, enforcement ऑफिसर। अगला सवाल है, द एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड्स अंडर चैप्टर 10 मस्ट फॉलो? ऑप्शन ए लोकल गवर्नमेंट रूल्स, ऑप्शन बी पंजाब पुलिस मैनुअल, ऑप्शन सी चैप्टर 8 ऑफ द कोड, ऑप्शन डी सिविल प्रोसीजर कोड। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी, चैप्टर 8 ऑफ द कोड। अगला सवाल है, द श्योरिटीज प्रोवाइडेड मस्ट बी? ऑप्शन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ऑप्शन बी पर्सन एक्सेप्टेबल टू द हियरिंग ऑफिसर, ऑप्शन सी फैमिली मेम्बर्स एंड ऑप्शन डी एनी टू सिटीजन। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, persons acceptable to the hearing officer। अगला सवाल है, द प्रिवेंटिव मेजर प्रोविजन इज अ? ऑप्शन ए सिविल रेमेडी, ऑप्शन बी क्रिमिनल प्रोसीजर, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव, ऑप्शन डी पुलिस गाइडलाइन। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, क्रिमिनल प्रोसीजर।
अगला सवाल है द सिक्योरिटी अमाउंट इन बॉन्ड्स कैन बी ऑप्शन ए ओनली कैश, ऑप्शन बी ओनली प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी एनी फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड, ऑप्शन डी ओनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी एनी फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड। अगला सवाल है the bond amount in preventive measure is option A fixed by government, option D determined by the hearing officer, option C as per rules of local body, option D decided by offender। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी determined by the hearing officer। अगला सवाल है the preventive measure of bond execution is to prevent option A delay in court proceedings, option B public nuisance, option C future violations, option D corruption in authority। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी फ्यूचर वायलेशन। आखिरी सवाल है द एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड्स अंडर चैप्टर 10 मस्ट फॉलो ऑप्शन ए लोकल गवर्नमेंट रूल्स, ऑप्शन बी पंजाब पुलिस मैनुअल, ऑप्शन सी चैप्टर 8 ऑफ द कोड एंड ऑप्शन डी सिविल प्रोसीजर कोड। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी चैप्टर 8 ऑफ द कोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।